Bismillahirrahmanirrahim, and welcome back to the last part of this lecture series. And I will just give you a little recap of the previous part of this lecture series. And we were discussing that a firm has to decide either to manufacture all the components of the products in-house, or they have to outsource. That means that they have to buy the components from other suppliers or manufacturers who are available in the market. So as I concluded, the advantages of make that was कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स बनाओगे तो आपको क्या फ़वायद होंगे। एक आप कॉस्ट लोअर कर लोगे, दूसरा आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर आपकी कमांड एंड ग्रिप रहेगी, और तीसरा आपका जो शेड्यूलिंग है वो आपकी कोऑर्डिनेशन हो, प्लानिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके ऊपर आपका एज ए फर्म कंट्रोल रहता है। नाउ द सेकंड डिसीजन व्हिच यू हैव टू मेक इज व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ बाय। नाउ बाय मींस when a firm decides to outsource the manufacturing of the components of the finished product which will be manufactured and assembled by the firm in question, so उसके क्या advantages होंगे। ये सबसे पहले आपको एक ज़्यादा flexibility provide करती है, and flexibility in terms of planning, coordination and implementation, एंड ये आपको ज़्यादा वैरायटी एंड ऑप्शंस प्रोवाइड कर देती है, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको कॉस्ट स्ट्रक्चर को ये रिड्यूस करती है इन बिगर पिक्चर। एंड finally it will help you capture orders from international customers अगर आप अपने बाय के स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बाय आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच ऑर्डर्स between suppliers as circumstances dictate. So you are not bound to stick to one supplier, but it depends on your orders and volume of the orders you are receiving. So it is dependent on your understanding कि अगर आपको bulk में products चाहिए तो ज़्यादा components चाहिए तो आप एक से ज़्यादा suppliers के साथ भी काम कर सकते हो। And if you feel like कि आपकी demand जो है वो decline की तरफ जा रहा है तो you can terminate your contracts at any given time. Secondly, the ability to particularly important when changes in exchange rates and trade barriers, the attractiveness of supply resources. So this decision is related with the two factors के exchange rate between the two countries, that is कि आपके और सप्लायर के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं अगर उसमें एक्सचेंज रेट ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और दूसरा अगर जिस कंट्री में आपने आउटसोर्स किया है कि आप वहाँ से वो चीज़ें खरीदोगे, वहाँ के अगर ट्रेड बैरियर्स हैं सच एज कोटाज हैं और मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बैरियर्स, अगर कोई गवर्नमेंट इन क्वेश्चन उसके ऊपर नई पॉलिसीज लेके आ जाती है तो वो आपको फिर सप्लाई रिसोर्स तक या इधर अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी। तो डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन यू कैन स्विच योर सप्लायर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। Buy advantage will help you lower your cost, can avoid the challenges involved with coordinating and controlling additional subunits of your organization, and at the same time the lack of incentive associated with internal suppliers, and thirdly the difficulties with setting appropriate transfer prices. तो आप अगर डिसाइड करते हो कि आप कंपोनेंट्स दूसरे सप्लायर से खरीदोगे तो ये आपको कॉस्ट लोअर करने में हेल्प कर देगी। ऑफसेट क्या होगा? आउटसोर्सिंग कैन हेल्प फर्म्स कैप्चर मोर ऑर्डर्स फ्रॉम सप्लायर्स कंट्रीज। तो अगर आपने वहाँ पे एक सप्लायर से जिससे आप कंपोनेंट्स मंगा रहे हो तो आपको उस मार्केट तक इनडायरेक्ट एक्सेस भी मिल सकती है कंज्यूमर बेस तक, तो आप वहाँ पे फिर उनके उस सप्लायर के मुल्क की जो कंज्यूमर मार्केट है उसको भी एंटरटेन कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ क्या है जी दोनों के दरमियान के, अगर आप बाय की तरफ जाते हो या मेक की तरफ जाते हो। बेनिफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इन हाउस आर ग्रेटर व्हेन, ये कंडीशंस हैं तब आप डिसाइड करोगे कि आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर कंपोनेंट्स बनाओगे जब आपके पास हाईली स्पेशलाइज्ड एसेट्स हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड एसेट्स में आपकी वर्कफोर्स है सबसे पहले, उसके बाद आपके प्रोसेसेस बड़े ऑप्टिमाइज्ड हैं, एंड देन यू हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एट योर हैंड। तो तब उस सूरत में आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर कंपोनेंट्स की तरफ जाओगे। और व्हेन वर्टिकल इंटीग्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी ऑफ योर फर्म, एंड इफ़ यू आर कॉन्शियस अबाउट इट कि आपकी वो जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो कहीं आउट ना हो जाए, तो उस सूरत में फिर आप मेड की डिसीजन की तरफ जाओगे। दैट इज बेसिकली योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। व्हेन द फर्म इज मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल सप्लायर्स एट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो वो फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा।
एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन कि आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद सप्लायर्स क्या होंगे, एंड वो सप्लायर्स आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को, या आप कैसे आपको फैसिलिटेट कर सकता है with reference to your quality manufacturing of your products and the delivery to the consumers. Some firms have tried to use strategic alliances to capture some of the benefits of vertical integration without having the associated organizational problems. However, in some cases, this fire backs as firms find their strategic flexibility limited by commitments to alliance partners ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जिस सप्लायर के थ्रू आप अपनी चीज़ें मंगवा रहे हो, वो सप्लायर सिर्फ आपके लिए ही एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं बना रहा, वो आपके कंपटीशन के लिए भी बना रहा होगा, वो किसी थर्ड पार्टी के लिए भी बना रहा होगा। तो इशू ऑफ कमिटमेंट आ जाता है फिर उसके अंदर कि वो सोलली होली एंड सोलली अगर आपके लिए, आपकी फर्म के लिए चीज़ें बनाएगा, तो फिर उसको स्पेशल बेनिफिट्स भी रिक्वायर्ड होंगे जो शायद आप उसको ऑफर करने के लिए विलिंग ना हो। ओके, now comes the question why logistics is important to international firm, that is such as firms like Apple, Google, Microsoft, Toshiba, Sony, you name it. These are the international firms, and why logistics systems are important for them. And the activities necessary to get materials to a manufacturing facility through the manufacturing process and out through a distribution to the end user, that is complicated by distance, time, exchange rates, and custom barriers. Efficient logistics can have a major impact on a firm's bottom line, that is, your finished product, which you have to ensure that it reaches to your target consumer base in an efficient and effective manner. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कि इंस्टेड ऑफ कि एक फर्म अपने इन्वेंट्री सिस्टम्स या अपने वेयर हाउसेस बनाए और वहाँ पे उस रॉ मटेरियल या सप्लाईज को प्रोक्योर करे, प्रोसेस करे एंड सेव करे, आइडिया इज़ कि इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम एक जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को इंड्यूस कर लेते हैं अपने ऑपरेशनल सिस्टम्स में। जस्ट इन टाइम और JIT इकोनोमाइज ऑन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो ये अभी आपको मैंने जो होल्डिंग कॉस्ट गिनवाई है कि आपको एक स्टोर चाहिए होगा, यूटिलिटीज़ चाहिए होंगी, इन्वायरमेंट कंट्रोल के मैकेनिज्म आपको डेवलप करने पड़ेंगे, फिर आपको वर्कफोर्स स्पेशली इस काम के लिए चाहिए होगी कि आप उसकी प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स कर सके। तो ये जो होल्डिंग कॉस्ट है इससे फिर आपकी वो काफ़ी कम हो जाती हैं बाय हैविंग मटेरियल्स अराइव एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जस्ट इन टाइम to enter the production process and not before that, कि आपको उसको hold ना करना पड़े। Just in time can result in major cost savings from reduced warehousing and inventory holding costs, and can help firms spot defective parts before your materials or supplies go into the production process। तो आप उसको बिफोर हैंड सप्लाईज को चेक कर सकते हो, जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको फिर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, टेक देम आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड विच विल अल्टीमेटली बूस्ट योर प्रोडक्ट क्वालिटी इन द लॉन्गर रन। So how internet is facilitating this logistic production and manufacturing processes over the world. Electronic data interchange, that is EDI, it facilitates the tracking of the inputs, that is raw materials कहाँ पे हैं, किस क्वांटिटी में हैं, कितने रिक्वायर्ड है। तो ये सारे का सारा डिजिटाइज आजकल के टाइम में हो सकता है और रियल टाइम में ये ट्रैक हो सकते हैं। आप अपने ऑन पर सर्च कीजिएगा। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक पिक्चर किसी के प्रोफाइल पे शेयर की है जिसके अंदर आइडिया है इसके, इस वक्त वो सैटेलाइट इमेजरी शो करी है कि पूरी दुनिया में जो ऑयल के वेसल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कार्गो शिप्स हैं, they are at halt, and that is the real time location of those oil transportation vessels. So it's astonishing just to count number of vessels right now stagnant in international open waters। क्यों? कि पूरी दुनिया में ऑयल की कंजम्पशन की डिमांड बहुत कम हो गई है।
सो यू आप उसको रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, फिर अमेरिका के अंदर वॉलमार्ट जो एक स्टोर है, उन्होंने जे आई टी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है। इन ट्रू एसेंस के उनके जितने सप्लायर्स हैं उनके पास रियल टाइम में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही होती है कि किस आउटलेट पे, किस स्टोर पे कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, एंड देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दो सप्लायर्स टू इंश्योर कि वो टाइमली वहाँ पे वो चीज़ पहुँच जाए। And secondly, it allows firms to optimize its production schedules and allow the firm and its suppliers to communicate in real time. Now, idea or the beauty behind this electronic data interchange is that real-time interaction is being conducted, monitored, and implemented between suppliers and the firm in question. And at the same time, this will allow JIT or electronic data interchange will eliminate the flow of paperwork between a firm and suppliers. Okay, I will conclude my this part of this lecture series, uh, and my request is कि आप प्लीज़ ये सारे के सारे लेक्चर्स सुनिएगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ताकि हम लोग एक हेल्दी इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट कर सकें। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चन एंड क्यूरीज। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू पीपल इन नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।